Hello, 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 guys. We are live on YouTube. We are live. हाँ. हेलो आमिर भाई, हेलो. कैसे हो? তুই কি করছিস রে? হ্যাঁ, তুই यहाँ सब बताओ. साकेत भाई, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम. स्वागत है, स्वागत है. अनिक भाई, हेलो. पता है ना, अभी स्ट्रीम शुरू होने वाला है थोड़ी देर बाद. सब साथ में देखेंगे बकचोदी. क्या प्लेयर्स आने वाले हैं, क्या होगा, कौन से प्लेयर्स आएंगे झींगा इवेंट में. झींगा, झींगा वाला इवेंट. चलो मैं वो वाला स्ट्रीम भी स्टार्ट कर देता हूँ. वो वाला स्ट्रीम भी मैं स्टार्ट कर दिया है. आई होप आपको सब दिखने लगेगा अभी थोड़ी देर में ही. मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ. आई होप अभी कनेक्ट हो जाना चाहिए. कोई एक जन मुझे देख के बताओ, हॉरिजॉन्टल वाला चल रहा है कि नहीं. वर्टिकल वाला तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे. हॉरिजॉन्टल वाला चल रहा है कि नहीं. कोई एक जन मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम में कुछ लिख के कंफर्म करो. हॉरिजॉन्टल वाले में कोई लिख के कंफर्म करो थोड़ा. नेमार, यस. आई होप सो नेमार आ जाए, मजा आ जाए. अब देखा जाएगा. अब ये लोग बकचोदी भी करते हैं. बकचोदी ना कर दे बस प्लेयर्स के साथ. हॉरिजॉन्टल वाले में कोई बताओ मुझे सही से सब दिख रहा है कि नहीं. मैं अभी स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ वहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले पे, जहाँ पे आपको गेम दिखेगा. अभी आपको गेम दिखने लगेगा हॉरिजॉन्टल वाले में भी. और वर्टिकल वाले में तो गेम दिख ही रहा है. आज इतना लेट मैं क्योंकि आज एफसी का इवेंट है ना, अभी थोड़ी देर में. तो इसीलिए मैं थोड़ा लेट ही आया हूँ, ताकि मैं वो वाला इवेंट भी कवर करके फिर ऑफलाइन चला जाऊँ. समझ रहे हो. 9:30 से 10:30 तक, 10:30 या 10 तक तो वो होगा ही एफसी का स्ट्रीम. तो यहीं पे बैठ के सब साथ में देखेंगे. अलग क्यों करना, उसके लिए अलग से स्ट्रीम क्यों करना. इसीलिए थोड़ा लेट स्टार्ट किया. कल से फिर 6 बजे से स्ट्रीम होगा. आज इसीलिए थोड़ा लेट स्टार्ट किया कि सब साथ में बैठ के देखेंगे. 9:30 को वो शुरू हो जाएगा. अभी तो 9:10 हो ही गया है, 20 मिनट पे स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, तब तक आप लोग फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दो. जो भी स्ट्रीम पे हो, फटाफट से स्ट्रीम को लाइक कर दो. साथ में बैठ के आज मजा लेंगे इवेंट का. फटाफट लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक कर दो. जल्दी से जल्दी स्ट्रीम को लाइक कर दो एकदम. जब तक स्टार्ट नहीं होता है, थोड़ा टीम रिव्यू भी किसी को करना है वो कर सकता है. मैं भेज देना रिक्वेस्ट, मैं कर दूंगा. अपना टीम दिखाओ. फॉर्मेशन चेंज है थोड़ा, इसीलिए 121 दिख रहा है. थोड़ा सा फॉर्मेशन को ट्विक किया है तो देखा मेरा भी 121 हो गया अभी यार. बस फॉर्मेशन का ही खेल है भाई. क्रेजी क्रेजी बोलते, क्रेजी बोलते. रुक जाओ, मैं दोनों विंडो अलग अलग खोल लेता हूँ ताकि मुझे दोनों चैट दिखें. अगर वहां पे कोई चैट करेगा तो मिस ना हो. चलो. वहां का चैट भी मुझे दिख रहा है, यहाँ का चैट भी मुझे दिख रहा है. भाई मुझे 8 ड्राफ्ट चाहिए पूल ए प्लेयर पैक में. ओके, यू नीड 8 ड्राफ्ट. गौरव शर्मा, मेरा कर देना रिव्यू रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ. ओके. आमिर टीओटी भाई ने पीलो చేసినాక तो पाई नहीं. अच्छा, चाइल्ड प्लेयर पाओ जाने की पैक करने के लिए. समझ गया साकेत भाई. आई होप आपको कुछ अच्छा मिल जाए. आई होप आपको कुछ अच्छा मिल जाए. मैं डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेता हूँ क्योंकि आई गेस मेरे दोस्त भी आने वाले हैं. एक सेकेंड. हाँ.
एक सेकंड ना। डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेता हूँ मैं एक बार, फिर हम लोग बातचीत करते हैं। चलो, टीम रिव्यू के लिए आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हो। खाना डिनर हो गया? नहीं नहीं, स्ट्रीम के बाद। ज्यादा लंबा स्ट्रीम नहीं है ना, जब तक इवेंट तब तक स्ट्रीम। इवेंट खत्म, स्ट्रीम खत्म। आज का इतना ही है। कल एक वीडियो आने वाला है लंबा, लॉन्ग फॉर्मेट में। क्या आने वाला है वो तो बताऊंगा नहीं, कल जब आएगा तब पता चल ही जाएगा। कल एक वीडियो आने वाला है लंबा, लॉन्ग फॉर्मेट में। एक वीडियो आने वाला है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है। साउंड ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं बताना, ठीक है, गेम का। लो 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 लो, टूर्नामेंट में क्या है? 3 में 35, 3 में 37। कांटे का गेम प्ले हुआ है। पापा उते, पापा उते ही चल रहा है अभी भाई मेरा। वो चल रहा है, पापा उते ही चल रहा है। टीम रिव्यू घोस्ट किलर। घोस्ट किलर भाई का टीम रिव्यू करना है। देखते हैं, ये मुझे किसी ने भेजा है, दुदू भाई। भाई ऐसा नाम कौन रखता है भाई? मतलब क्या सोच के रखे हो नाम भाई? हैं? रिक्वेस्ट भी भेज के रखा है, मैंने ये रिक्वेस्ट देखा नहीं था तब। ये कोई नाम होता है? हैं? कुछ ढंग का नाम रखा करो भाई। स्ट्राइकर क्लॉइबर्ट नहीं चलेगा। रोनाल्डो मिल गया, बहुत बढ़िया। मेसी वाला ये कार्ड राइट विंग पे नहीं, कैम पे खिलाओ, काम आएगा। बाजियों को हटा दो, उसको कैम पे खिलाओ मेसी वाले कार्ड को, ठीक है। काई से दो। भाई भेजा हूँ, हाँ गौरव भाई करता हूँ। मास्चेरानो काई से दो, ठीक है। ता वैंडाइक, वैंडाइक भी मिला है, तुराम। ये गोलकीपर एकदम अच्छा नहीं है, डेविड रहा, कुछ मत करना इसके साथ। जाओ कैंसिलो, वैंडाइक, रोनाल्डो, मेसी, अच्छे अच्छे कार्ड मिले भाई। ठीक है, बाजियों को कुछ मत करना। बाजियों को तुम अगर कैम खिला रहे हो, ठीक है, खिला सकते हो। मेसी को राइट विंग खिलाओ, लेकिन मैक्स करना पड़ेगा तभी काम आएगा। समझ रहे हो घोस्ट किलर भाई? अगर उसको मैक्स किया ना, तभी राइट विंग को काम आएगा, नहीं तो वो स्ट्राइकर पोजीशन की वजह से लो ओवीआर में चलेगा। समझ रहे हो? एक सेकंड ना, बाकी हटा देता हूँ मैं एक बार। चलो पार्थ भाई का देख लेते हैं। पार्थ भाई का 119 ओवीआर है। रोनाल्डो, यमाल जूनियर, पाकजीसुंग, ब्रूनो, मेसी। मेसी सही जगह पे खेल रहा है। पाचो, नेस्टा, जाओ कैंसेलो को लेफ्ट बैक खिलाओ, कार्लोस को। अच्छा ठीक है, खिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जाओ कैंसेलो को मैक्स कर देना, तभी पोटेंशियल दिखेगा। वाओ भाई, डोनारुमा ठीक है। बट कोई भी प्लेयर तुम्हारा मैक्स, जो जो जरूरत है वो मैक्स नहीं है। जैसे डोनारुमा मैक्स होना चाहिए था, नेस्टा मैक्स होना चाहिए था, तो इनको मैक्स करने का ट्राई करो भाई। अ, भाई एम्बापे को यूटोटिया में एक्सचेंज करने के लिए रैंक अप करना पड़ेगा क्या? आज ही पता चल जाएगा। अभी 14 मिनट बाद पता चल ही जाएगा भाई। 14 मिनट बाद पता चल जाएगा भाई। भाई आपका गेम प्ले देखा, 10 स्टार पहुंच गया फाइनली, फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं। ओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। मैं कल एक वीडियो लाने वाला हूँ, वो आपके लिए थोड़ा और इन्फॉर्मेटिव होगा। जो जो आप लोग आए हो स्ट्रीम पे, कल एक लॉन्ग फॉर्मेट पे वीडियो आने वाला है। वो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके काम का भी होगा। रैंक पुश में हेल्प करेगा आपका। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगे। कल के दिन पे वो वीडियो आएगा। सब्सक्राइब करके रखो, बेल और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, ताकि जब वीडियो आए तो आप देख पाओ। ठीक है भाई। गौरव भाई का टीम देख लेते हैं। स्ट्राइकर में मेसी नहीं चलेगा भाई, उसकी जगह पालमर की जगह पे खिलाएगा तो बहुत अच्छा खेलेगा। ठीक है, स्ट्राइकर में मेसी की जगह कोई और एक अच्छा स्ट्राइकर खिला लो। स्टाम को राइट साइड खिलाओ एंड हीरो को लेफ्ट साइड खिलाओ। कोल टूराम, डिफेंस सही है, मिडफील्ड भी सही है, अटैकिंग में बस एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए। रफीने का जो मैक्स किए हो अभी, अगर कार्ड आया, अगर आया सब्स्टिट्यूट में, तो फिर खुश हो जाएगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, रफीना को खिलाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है, बट स्टाम को राइट साइड खिलाओ एंड हीरो को लेफ्ट साइड खिलाओ। ठीक है भाई, इसको थोड़ा चेंज कर लो, स्वैप कर लो भाई थोड़ा। एक सेकंड रुक जाओ, इन दोनों बकचोद को एक बार फोन कर लेता हूँ, अगर ये आएंगे तो स्ट्रीम शुरू ही होने वाला है थोड़ी देर में। एक बार फोन कर लेता हूँ, एक सेकंड का। अगला रिव्यू के लिए किसने नाम भेजा है? ये নিবিড় ব্রো, নিবিড় ব্রো বলো। কনে? গুড ভাই, যদি স্ট্রিম একসাথে দেখিস তাহলে স্ট্রিম করছিস চালু করে দিস, আমি ডিসকর্ড চলে আসো।
ঠিক আছে, আমি খাবার বানাচ্ছি, আমি দেখছি। হ্যাঁ, মানে 13 মিনিট পরেই হবে, দেখছি। আমি বললাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। चलो, ये टीम किसका है? ये टीम किसका है जरा बताना। नाम लिखो जरा, ये टीम किसका है, देख लूं कौन है ये बंधु। निबीर ब्रो। ओके, लिख गया। निबीर ब्रो भाई आपका टीम देख लेते हैं। निबीर ब्रो भाई 22 लेवल की आईडी है, नया आईडी बनाया है आपने। बाजियो मिला है। बाजियो, विनीसियस जूनियर, वेरॉन, मैक्टिमुनी। मिडफील्ड डिफेंस में ये कार्वालियो और विनी जूनियर। बस यही प्लेयर्स अच्छे हैं, बाकी प्लेयर्स अच्छे नहीं हैं। सोच समझ के रैंक अप करना। रैंक अप को बहुत सोच समझ के यूज करना भाई। ये एक एक करके रैंक अप मत करना। एक अच्छा प्लेयर उसको मैक्स, एक अच्छा प्लेयर उसको मैक्स, एक अच्छा प्लेयर उसको मैक्स, ऐसे रैंक अप करो। वो तेरे को आधा, तेरे को पौने आधा, ठीक है, तेरा एक टांग काट दिया, तेरा एक हाथ काट दिया, तेरा एक उंगली काट दिया, वैसे मत करना भाई। करना है पूरा करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, और अच्छा प्लेयर मिले उसको ही करना, आधा पाधा मत करना। एम्बापे है मेरे पास, रैंक अप नहीं किया हूं, वेट कर रहा हूं, आज ही पता चल जाएगा। आदित्य ईएसपी नेम আছে, কি করবো आदित्य भाई, আমি বুঝতে পারলাম না क्या करना है आदित्य भाई। Don't subscribe to the channel. आदित्य भाई मुझे समझ नहीं आप करवाना क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट आदित्य भाऊ। साला इतना कुछ करके भी 190 हो रहा है। फ्रेंड, फ्रेंड आदित्य ईएसपी नाम का मेरा तो कोई फ्रेंड लिस्ट में नहीं है भाई, सॉरी। कुकुरेला, कुकुरेला पारेला। कुकुरिया का नाम देखते ही मेरे को भाई हंसी आ जाता है भाई। कुकुरिया का नाम देखते उसका फेस सामने आ जाता है। ओल्ड विन 114, शुड आई रैंक अप एंड यूज एट स्ट्राइकर, नहीं अभी नहीं। ये इवेंट, अभी जो इवेंट आने वाला है देख लो क्या आने वाला है, मैं बोल दूंगा उसमें, स्ट्रीम पे ही बोल दूंगा ये जो इवेंट आ रहा है उसमें क्या होगा। रैंक अप टोकन 3000 जमा किया यूटूटिया के लिए, ये काम सही किया है भाई, ये सही काम किया है। ये यूटोटीओआई के लिए अगर आपने रखा है तो भाई ये सही काम किया है। ठीक है, 10 मिनट में स्ट्रीम स्टार्ट होने वाला है। मेरा आईडी मैं पिन कर देता हूँ, रुक जाओ। मेरा आईडी पिन कर देता हूँ यहाँ पे। मेरा भी 121 या 120 दोनों में से कोई भी ओवीआर दिख सकता है, जो भी दिखेगा उसमें रिक्वेस्ट भेज देना। ठीक है, 21 या 20 जो भी दिखे, 20 और लिख देता हूँ 120 और 121 जो भी ओवीआर दिखे उस पर रिक्वेस्ट भेज देना। ठीक है, पिन कर दिया हूं मैं, जाके देख लो, इसमें रिक्वेस्ट भेज सकते हो आप। ठीक है, क्यों किसी बोला माँ किसी बोला भाई, ये गेम खेलते फ्रेंडली, जीते तो नहीं पाऊंगा बट ऐसे ही खेलेंगे, थोड़े थोड़ी देर रुक जाओ। कार्लोस एल्बर्टो रोनाल्डो अपकमिंग, अच्छा बढ़िया है, देखते हैं अमीर भाई क्या आता है। सौरभ किसका आईडी है, सौरभ किसका आईडी है। मुझे कोई भी चैट में सौरभ नहीं दिख रहा है, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल। सौरभ कौन है भाई, मेरा। चलो सौरभ भाई देख लेते हैं आपका टीम 121। अरे बाप रे, जॉट टीम है भाई। बस एक सीडीएम मिल जाए अच्छा सा और एक एलएम मिल जाए। एलएम में हैजार्ड अगर होता आपके पास तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास हैजार्ड होता तो अच्छा होता। एक एलएम चाहिए और एक सीडीएम चाहिए, बाकी तो टीम आपका पूरा अच्छा ही लग रहा है भाई, कुछ दिक्कत नहीं है, सही टीम है। एलएम पे हाजी है, अरे हाजी को खिलाओ भाई, डेविस को मत खिलाओ। फिर हाजी का ये वाला अगर कार्ड है ना जो 115 आया है, मस्त कार्ड है भाई,
मस्त कार्ड है वो, 115 वाला कार्ड, क्रेजी कार्ड है, उसको खिला सकते हो, क्रेजी कार्ड है, क्रेजी कार्ड है, मैं बता रहा हूँ। हाँ ऐसा थोड़ा डेंजर तो है। हमारा যেদিন 120 वगैरह হবে সেদিন আমিও খেলবো। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, अच्छा ठीक है जी। एक बार मैं देख लेता हूँ इनका स्ट्रीम कब स्टार्ट होने वाला है। इनका स्ट्रीम स्टार्ट होने वाला है विद इन 7 मिनट्स। ओके, 7 मिनट है मेरे पास। तो एक मैच में किसी के साथ खेल सकता हूँ, एक मैच। जो जो यहाँ पे मैच खेलना चाहता है अपना नाम और ओबिया लिखे, और मैं एक मैच उसके साथ खेल सकता हूँ। मैं कोई सर्च नहीं कर सकता, आई एम सॉरी प्लीज। एक मैच में किसी के साथ खेल सकता हूँ, नाम और ओबिया लिखो, आमिर भाई चूज करेंगे, एक मैच खेलूंगा और फिर स्ट्रीम पे चले जाऊंगा सीधा। ठीक है, अभी देखो। 250, 2.5 लाख जेम्स उड़ा दिए भाई, मैंने भी उड़ाया है। सही है, बट रैंक अप करना होगा उसको। सही है, रैंक अप करना होगा। 7 मिनट बचे हुए हैं स्ट्रीम स्टार्ट होने में। एक जन के साथ खेलूंगा, नाम ओबिया लिखो, अगर कोई है खेलने लायक। अगर एक ही बंदा रहा तो नहीं खेलूंगा, 2-3 बंदे रहे मैक्स तो मैं खेल सकता हूँ किसी एक के साथ। और वो भी आमिर भाई चूज करेंगे। आमिर भाई आप हो स्ट्रीम पे? आमिर भाई आप हो, ठीक है। 2-3 बंदा अगर नाम लिखे, 2 बंदे ही दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ 2 ही बंदे दिख रहे हैं खेलने के लिए। 3 बंदे दिख रहे हैं। ठीक है, सौरभ भाई एक सेकेंड। सौरभ भाई आ जाओ, सौरभ भाई के साथ मैं कभी नहीं खेला हूँ, पार्थ भाई के साथ खेला हूँ, इसके साथ भी खेला हूँ। ठीक है, सौरभ भाई आ जाओ, सौरभ भाई आ जाओ, एक ही मैच खेलेंगे, एक ही मैच खेलेंगे, बाकी हम फिर से खेलेंगे। एक ही मैच खेलेंगे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, 5 मिनट बाकी है, जल्दी आओ। कर लिया हूँ, कर लिया हूँ, आ जाओ, आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। मजा आएगा, फिर से start है शायद। मजा आएगा खेलने में। हार भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई लाइक करो ना यार थोड़ा स्ट्रीम को प्लीज यार, जो जो देख रहे हो लाइक करो, अभी तो स्ट्रीम शुरू होने वाला है, थोड़ा लाइक कर दो भाई। गौरव शर्मा भाई खेलेंगे, आप टेंशन मत लो। हम भाग नहीं जा रहे हैं, हम यही हैं, हम यही हैं, हम भाग नहीं जा रहे हैं, हम खेलेंगे। पहला दिन नहीं है भाई, मैं रोज खेलता हूँ सबके साथ। आमिर भाई ने चूज नहीं किया, मैंने किया है। जल्दी आओ भाई, सौरभ भाई थोड़ा जल्दी आना, थोड़ा लाइक कर दो यार स्ट्रीम को, और 4 मिनट में वहां पे स्ट्रीम शुरू होगा, जल्दी आओ। गौरव, मैंने तो सौरभ चूज किया था ना, सौरभ भाई। अरे यार मैंने रिक्वेस्ट भेज के रखा था ब्रो, आ जाओ यार। जल्दी करो भाई, चलो 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 चलो, फटाफट एक मैच खेलते हैं, उसके बाद स्ट्रीम पे जाते हैं सीधा। अरे एफसी गेमर भाई, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो आप? कैसे हो? लाइव हो गया है? नहीं हुआ है, देख रहा हूँ मैं यहाँ पे खुला हुआ है, उसको पॉज करके रखा हूँ अभी, बिगिन सून दिख रहा है। आमिर भाई स्टार्ट हुआ 자, तो बताना। 오늘 그라운드 위에서 또 어떤 드라마 같은 경기가 펼쳐질까요? 자, भाई 오늘 टीम रिव्यू, 중계방송 आज हम लोग 캐스터 स्ट्रीम के 배성재고요. स्ट्रीम नहीं करेंगे, 이병철 해설위원이 इवेंट आने 마이크를 वाला है, उसका 잡았습니다. स्ट्रीम साथ में बैठ 자, के 오늘의 देखेंगे। 경기 굉장히 흥미로운 매치업인데요. 모hunbagan 슈퍼자이언트와 바이에른 뮌헨의 맞대결입니다. 네, 언론에서도 이 경기를 꽤 많이 다뤘거든요. 어떤 경기가 될지 저도 한 명의 축구 팬으로서 기대가 됩니다. 키엘리니
쿠만. 자, 길게 가요. 탐색을 계속하고 있습니다. 자, 패스를 주고받으면서 빈틈을 노리죠. 공을 빼앗기고 말았습니다. 상대 진영으로 선진, 기회를 노립니다. 수비 따돌립니다. 제쳤습니다. 완전히 열립니다. 골 터졌습니다. 벌써부터 터집니다. 자, 오늘 경기 심상치 않은데요. 아자르, 공 잡는 엘링 홀란, 지쿠, 기회를 만들기 위해 앞으로 전진합니다. 자, 동점골 기회. 골! 동점골입니다. भाई टीम भी 동점골. नहीं होगा इसके बाद 초반부터 टीम 치열한 देखेंगे साथ 경기가 में 펼쳐집니다. एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा पूछ लेना ठीक है 인터셉트 बार 성공합니다. बार नहीं बोलूंगा सेमी बंदा बार बार पूछ ले हो गुस्सा मत दिलाओ ठीक है 베스트. 자, 혼자서 공격을 이끌고 있습니다. 자, 이러면 계속 위기죠. 찬스죠. Let's go! Come on! 타이밍에 나온 리드골입니다. 앞서 나갑니다. 앞사람이다 앞사람이다 상대에게 리드를 내줬습니다. 반격을 준비하는 뉘넨인데요. 호날두. 기회입니다. 기회입니다. 열립니다. 알오아이란. 상대가 볼 가져갑니다. 크리스티아노 호날두. 호날두 동료를 활용할 수 있습니다. 아, 멋진 플레이. 수비를 빠져나옵니다. 알오아이란. 자, 근소한 리드를 유지하고 아무도 없습니다. 아무도 없습니다. 골! 나이스 골 바이에른 뮌헨의 동점골입니다. 이제 나이스 경기는 골이야 다시 이제 잘해 अभी 원점입니다. 자, 이렇게 24-23 सेकंड में लाइव होगा 선수들 이제 하프타임을 맞이합니다. चलते हैं वहां पे 자, 바이에른 देख 뮌헨 लेता हूँ मैं एक 선수를 बार 바꿔줍니다. वहाँ ही देख रहा हूँ मैं लाइव हो जाएगा तो गेम के बीच में चल जाएंगे 바이에른 뮌헨의 킥오프로 후반전 시작합니다. 샤비 알론소. हुआ नहीं अभी तक होने वाला है 공을 바로 되찾아오네요. 멋진 태클입니다. 수비를 무너뜨립니다. 수비를 무너뜨립니다. 열렸습니다. 기회인데요. 막힙니다. 자, 살아있어요. हेलो हो गया लाइव 살아있습니다. 결국은 यहाँ पे लाइव हो चुका है 자, 키퍼가 막아낸 आई गेस हम लोग वहीं पे जाना चाहिए 공을 집어넣습니다. बाद में भी खेला जाएगा ठीक है वहाँ पे चलते हैं 네컨, बंद करते हैं इसको 조지베. क्योंकि हम मेन हमारा टारगेट वही है तो वहाँ पे चलते हैं गाइस चलो लेट्स एंजॉय द स्ट्रीम How are you feeling today? It's you, Toddy Day. इट्स यू टॉडी डे Toddy, major Let's go. moment. Let's enjoy this. It's been what? बाद में खेला जाएगा ठीक है fourth- फिर से खेल सकते हैं हम लोग fourth team of the year. Hello. And it's always a blast. It's good to be back here. How's it going, everyone? I missed you all. Wasn't here for the team of the ये year. दोनों review, बच्चों साथ में आ गए but फिर से ultimately, I got here for the ultimate team of the year review. How's it going? बाय बाय टाटा Good to see everyone here. Smooth. Ha! लेट्स गो Very smooth. लेट्स एंजॉय Love द it. स्ट्रीम गाइस No, it's इसको भी great बड़े to be स्क्रीन here. पे देखना है हॉराइजॉन्टल में चले जाओ As you said, we've been through multiple U-Toddies. It's feel like every year it's something different, it's something exciting, it's something new. The players are obviously the stars, and एंटवान और excited ताक to see who they are. ताक भाई जब ताक गिर गया है And I guess भाई आप मत celebrate खेल दो Team of सौरभ the भाई Year हम as a सॉरी whole. So बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि it's awesome seeing हम all of you खेल guys in करने वाले chat मतलब already. जो मेन मोटिव है उसके लिए हम आ Making गए your voices heard. We can read a lot of the comments. यही coming मेन through मोटिव है on ना the स्ट्रीम का तो stream, इसीलिए so, आना पड़ा it's great to be here. Hope you guys are doing well. Team of the year though, as a whole, as an event, TAC, it's had its ups and downs. We'll put it that way. And आप लोग वर्टिकल पे चले जाओ जिसको जिसको भी देखना है बड़े स्क्रीन पे ठीक है? Absolutely. I wasn't here for the live stream, but we have been following up on the feedback. We have been having discussions, and as always, thank you for sharing your voices. अरे बहुत बकबक करते हैं भाई Happy that बकबक you guys have मतलब been having बकबक नेक्स्ट लेवल का बकबक कर सकते हैं ये लोग and keep talking. We're hearing you all. keep talking we're hearing you all yeah, exactly. Come I feel on, like the come team on. of the year
Obviously, a lot of the feedback that's been coming through in the first couple weeks has been heard. It's been noticed. It's been talked about. So obviously, we see what you guys are writing in chat, seeing what's on the social channels, on Reddit, Discord. Like we're seeing it. We भाई इसको understand it. टाइम आउट दो तो ये कौन है ये ब्लैक होल भाई को टाइम आउट दो यार Voices are being heard. टाइम आउट दे इसको And I guess we बच्चों just want to make sure here एक भी चीज दिखे जा रहा है Ultimate तब Team से of the Year has some of those exciting moments that you've come to expect year over year. आमिर भाई इसको टाइम आउट दो तो And from taking the first look here with you guys, I'm hoping that we can hit some of those fun बोल रहा हूँ moments तब से एक ही चीज लिखे जा रहा है लिखे जा रहा है समझ नहीं आता है we can get and look at the stats. Because TAC, this is one of those where like Utah players in the Utah chapter, it kind of brings a bit of like, oh man, this is one of the pinnacle moments of the year. Yeah, exactly. That's what we're all here for, right? Getting some Utah players to our teams. Exactly. So And losing I think at just division one rivals. well, obviously that goes without saying for in both my of case, us. in my case. Yeah. So one thing, just before we jump into it, I always love to see like in chat, where are you tuning in from? So drop in the flag of where you're from, or even just write it in chat. Where in the world are you tuning in from? And once we get everybody to drop that into chat, we'll jump right into the Utah player reveal, and we can see their OVRs and all that. But just want to see in chat first, see how like global and worldwide our game is. आमिर भाई मार सीखे हैं So just drop that in, and then we'll. रशकप भाई हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम हम सही हैं आप बताओ आप I कैसे हो just dropped mine right now. I'm not currently in Brazil, but आमिर भाई Brazil. And for all of our Brazilian fans out there, we have some exciting news. We'll get to it later. भाई ताक को देख के ऐसा इसके टकले पे मारने को मन करता है ताक So को देख के। love to see that chat, everyone dropping in. But TAC, I mean, we don't want to yap too much here. I feel like everyone is in stream, everyone's ready to go, and we want to show the OVRs of Ultimate Team of the Year. दिखा Are you दिखा ready to go? दिखा दिखा ओवीआर दिखा I'm भाई ready, Antoine. I was born ready. All right, here we go. All right. Let's hit it. ओ Here they are. हालान को 115 दिया है भाई Ultimate Team of the Year. Obviously the 12th best में 11. and the Rafinha 12th दिया है man, भाई no surprise here of who they are. 12th मैन में But TAC, रफीनिया the दिया है OVRs, we can look and say 117s रफीनिया for the एम्बापे peak here. रॉइस Mixed in with some 116s and then a 115 Saliba, Van Dijk, right back Koundé. striker. तो पता ही First था thoughts. डोनारुमा We'll get to the difference between players that were already 117. Don't worry, we'll cover it all. First thoughts, really happy to see Rafinha there as 12th man. My thoughts, honestly, all these players are ballers. They definitely deserve. ये पता ही था राफीनिया आने वाला है रोनाल्डो नहीं आ गया तो 100% पता था 11. Your thoughts, Antoine, and everybody tuning कोई भी in. फील नहीं है भाई What are your thoughts? Do you agree? Did it coincide mostly with your votes? It did with mine. Like 50%. My votes had a lot more Brazilians in there, but 50%, I got it right. So I'm interested in seeing like the three strikers. आवाज आ रहा है ना Obviously, like स्क्रीन पे इसका स्क्रीन midfielders, का आवाज आ रहा है ना defenders, we're बता देना मेरे pretty को sold on the positions. CMs across the board in the middle, and then left back, center back, right back. But I think it's having those three strikers, and it's like Mbappe, are you going to be playing him striker? Are you going to be playing a left wing? Someone like a Dembele, is he striker as well? You can play him on the wing. Holland, I think, without saying, is a striker. But I think it's just those two, Mbappe and Dembele. Where are we going to play them? Where's their best spot? हालांकि And that's 115 where we की can look देते भाई into मुझे the समझ नहीं stats a आता little पता bit later. पता नहीं भाई And हालांकि then अलग ही we can all दुश्मनी है इनका understand, okay, these are the skill points that make sense, these are the stats, and then come to kind of a conclusion there. So those are my two wild cards. चलो देखते हैं आगे Also दिखाओ point out to Van Dijk and the fact that he has been collecting Team of the Year trophies for 1,000 years in a row. I even lost count. He must have, a dedicated room in his house just to store his Team of the Year trophies. Because हालान That's का insane. हाँ निकाल दिया अरे I think Well it's deserved 7 years too. running now. Yeah. 7 years running. मार खाओगे अमीर भाई Someone in Right, chat will Mr. have Van to Dijk. correct me if I'm off there, but that's my guess. I think it's 7 years of toddies, which is incredible. मेरे पास But राफीनिया है I'm getting the Shows game build ready consistency. here. If we want to pull it up Rafinha on है screen, और- we can go through the actual ये हालांड है event of Ultimate Team of the Year. और कुछ नहीं है I'm ready. I'm excited. अरे हाँ
चलो All दिखाओ. right, here we go. So, Ultimate Team of the Year. Right away, I think we can start off with Utah ओ draft. भाई इसका Right ड्राफ्ट. away, this is kind of going to be the main ओ place भाई that इसका we ड्राफ्ट दिया need भाई. to know for Team of the Year. And it's in Utah Yeah. 1 and Utah 2. And as you can see, U21 and certain U22. players are in Utah 1 Oh my and certain God. players are in Utah 2. So, as we can see, TAC, there Yes, are new सही किया Utah भाई. draft vouchers. These are separate than the regular vouchers. अरे नहीं ये दूसरा So, वाउचर है. I've already ये put कौन सा myself वाउचर है here भाई? about 10. And then अच्छा मतलब इसके what's लिए भी coming अलग to से see here जेम्स as well, चाहिए. this is the Toddy icon. This is a new draft here. This one uses the FC draft vouchers that we've had. अच्छा from उसको Team of the चेंज Year. करके आइकॉन का एक अलग So, सेक्शन बना दिए. Pool A and Pool B. But I feel like right off the bat, भाई साहब. having it separate into here, two different एल एल 117s and 116s. एल So you'll come in and do this. Very similar to how the rest of the event has gone. सब And एल just मार to रहे हैं. show in the store how you'll be getting these draft vouchers, it's going to be in a new Utah. So 45,000 it's pretty भाई. straightforward when it comes to getting the voucher set with gems here. 45,000. And then any of the other offers here, these are going to be हे for the icons. So भगवान. just remember that. Utah is separate. The icons ones uses the same voucher as we've had before. 45,000 भाई. Absolutely. 10 I ड्राफ्ट think के we'll get a लिए. clearer picture after we see the stats and attributes. But I'm Yeah, curious to right. hear from you and from the community which of the draft options there seems more enticing in terms of the pool of players that you can get. भाई क्या कर दिया गू कर दिया भाई. And as we go into the Utah chapter, we have the starting 11 here and the 12th man, Rafinha. We'll check in their stats just shortly, but wanted to also show how the Utah exchanges work. So each player will have an exchange where you can take his nominee version and trade it alongside some Team of the Year players इसको रेड करना to पड़ेगा. get the Utah version. रेड करके So- एक्सचेंज करना पड़ेगा. As you can tell, some of them have different OVRs, but what's interesting is they're going to be red ranked is the requirement for Red ranked, putting yeah. in the nominee player alongside some other Toddy players with it. We won't go to the exact specifications, but then what you get is the Utah version at अरे gold दिखा भाई. rank. So क्या चाहिए the nice इससे? thing here is you save out on rank up tokens. अरे बहुत बड़ा धोखा दे दिया भाई. And Antoine, I think this is what excited me the most about एक्सचेंज क्या UTC. एक बार में Because हो of जाएगा? course, you have the option to try to get the players from the draft, but एक्सचेंज करने में by लगेगा क्या? having वो this तो दिखाए पहले. mechanic of exchanging your nominees plus more requirements for guaranteed Utah players that you want really makes it more accessible. We can get to the requirements. What I can say is that the requirements depend on the OVR and the attribute improvements between the nominee पहले तू and दिखा the कितना चाहिए. ultimate version. I would say in most cases, I thought it was accessible, but I'll let the community. जो प्लेयर देंगे अभी ना वो भी we'll 115 के take a look at the 114 के होंगे. commentary मिला लेना. after it's released. Of course, we can't show the requirements because it'd be unfair. But yeah, just wanted to highlight this. Once it's released tomorrow, Thursday in UTC timing, you guys can all check at the same time and you see if I'm right or not. The other thing too is if you've been using देखते हैं nominee कितना players, देंगे. so let's say I've been using nominee Mbappe and I've kind of held off ranking him just because भाई I was thinking, ट्रेन all right, प्लेस I don't know 10 if I टाइम want to समझ use him in आया. the future. But let's say you are using a मिलेगा nominee player, क्या? you really like him, you're using Dembele, and you've ranked him up already to rank मिलेगा क्या भाई? ये तो gold. समझ नहीं आ You रहा है. can look and say, hey, I'm going to go exchange him, upgrade him to Utah, and I don't lose out on that rank because I'm getting his Utah back at gold. So it is nice that you don't get them back at unranked and have to spend the extra rank tokens on there. But yeah, as Tax said, we can't show the requirements because that would have some market implications. But I'm sure you guys will be able अबे to look at all of requirement them तो दिखा. when it comes out and decide what's worth it. What do I want to go for? But needless to say, we have some Utah quests as well for weeks 1, 2, and 3.
So complete all भाई of these दिखाई नहीं quests रहे। over the 3 weeks. So these are all pretty simple. This is the week 1. And as your final reward for completing all these quests, you get your choice between either Kunde, 115 right back, हालांड नहीं चाहिए मेरे को, Holland, कुंडे the चाहिए भाई, 115 striker. मेरे को कुंडे चाहिए। So think of this, guys, as your हालांड का Utah जरूरत like नहीं है भाई। final reward for just completing quests. These, however, are not pre-ranked. So if you do want to take that Holland and then put them into the exchange, you would need to rank them up to at least red. कुंडे ले लूंगा मैं। Which one Chat, would who you are we take? picking between the two? कुंडे ही जाएगा भाई, हालांड जरूरत नहीं है भाई। Curious about this Haaland. He might be. if you कोई have to नहीं pick, लेगा he हालांड, might तू be मिला लेना भाई, off. कोई नहीं लेगा हालांड। अरे लास्ट इवेंट भी तो हालांड था भाई, कुछ Yeah, I'm नया curious दे to know, भाई। chat. Like right backs, like I still have Zambrata from Glorious Eras as my 150 नया right दे back. नहीं, हालांड, So अरे I don't know हालांड if तो I'd go for हुआ Koundé. कितना I feel like हालांड देगा strikers भाई। there's been a lot of good strikers coming out, so it मेरे is को तो tough. But कुंडे I would चाहिए। like to know, like, who are you guys picking if you have to pick between these two? And for people asking, like, why would I rank up this Koundé or this Holland to put in the exchange? The thing is, it's a requirement for the Utah exchange. Like, you need to have that player ranked up. Yes. You need to have the nominee version at 4 or more rank up levels. So you अरे मुझे एक्सचेंज दिखा must आंटवान, be तेरा red टकला rank फोड़ दूंगा or मैं। more, for you to trade in आंटवान को टाक बना दिया, टाक for को the आंटवान। ultimate version. बहुत बढ़िया, इनका प्रोडक्शन। Exactly. So let's get into the stats because we've been going through a lot of the आंटवान exchanges ऊपर here वाला and है, how it works. नाम बदल लिया। But let's start it off with Ousmane Dembele, Utah 117. Some slight stat increases. गजब है भाई ये He's लोग। 5'5". High five. And he's, I guess, one of the contemporary symbols of being a 5'5" player. You don't know which foot he would use. Very, क्या बोलूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। what's the word? Bi-footed? Ambi-footed? कौन डब्लू लिख रहा है, कौन है वो? Amphi-footed. I haven't heard that one before. अरे जाना यार, So, तेरा चैट समझ मेरे को नहीं देखना है। He can also play right wing. And I guess that would be interesting to see. Are people going to be using up front? Aura minus. False 9 style, or are you going to put him out on the right? औड़ा जीरो भाई। Then let's look at Mbappe here. 5-star skill moves, 4-star weak foot, and 150 ये pace. बात जो 4 स्टार क्यों दिया भाई? And then can play left wing as well. A lot of traits. ये क्या बकचोदी है? And then let's check out the Holland 115. This is the one from the final milestone. हालांड का पेस 135। ये क्या पेस है भाई? Interesting player. 148 पेस है उनका, इसका 135। Just looking at the stats, they're fine. That's fine. If टाकते टकला फोड़ दूंगा मैं। or not. I think we'd have to test it in game. Maybe somebody can post a review later on. I'm really curious. I like to see like different players that Who doesn't took bite? exactly fit the meta. भाई सब स्ट्राइकर का 140-45 से ऊपर, हालांड 135। Then we got This is my Rafinha. go-to guy. Antoine, this is my go-to guy. I do have a Rafinha अच्छा है, वाला कार्ड अच्छा है। waiting to be exchanged. बट राफिनिया राइट विंग खेलता है यार, लेफ्ट विंग पे दे दिया। प्ले मेकर, स्पीड ड्रिबलर, सही है, ठीक है, ट्रेड्स अच्छे हैं। Check out Vitinha. विचिने भी अच्छा है भाई, Can play Cam as well. बहुत पूरा स्टैमिना देख रहे हो। So, और Chad, what are we पूरे thinking हाफ about का the difference स्टैमिना है भाई, between पूरा मैच खेल लेगा, Utah player items and the Toddy nominee? पूरा मैच खेल लेगा भाई। How do we feel about that upgrade between the two? And for context, for an example, Mbappe would have requirements that are much lower than Rafinha's exchanges because the difference there in OVR and attributes aren't as steep when you compare both. हर प्लेयर का एक्सचेंज अलग अलग है, उन्होंने बताया। हर प्लेयर के That is a good एक्सचेंज अलग अलग है, context, yeah, just to know the difference. मतलब हर प्लेयर का रिक्वायरमेंट अलग अलग लगेगा।
इधरी श्रीकांत Srinakhtar, Declan Rice here. welcome to the stream. This rice looks Play amazing. CDM. Yeah, just all around. अच्छा ये I बंद think होते स्ट्रीम between the खत्म three होगा, हमारा स्ट्रीम भी midfielders, बंद हो जाएगा, ठीक है? choice, 'cause I जब like तक ये है someone तब तक हम else स्ट्रीम who करेंगे. really have the physical and defending stats, even though you're using them in a more advanced position. एक्रोबैटिक क्लियरेंस सीडीएम कार्ड है, ये नाम का ही Rice is सीएम है, very सीडीएम कार्ड है versatile as a मेनली. CDM. Can go up and down, make some good passes. अटैकिंग And here's the सेंटर other में नहीं है. 115, Kunde. कुंडे अच्छा है, कुंडे का स्टैमिना 4. Can play center back. सेंटर बैक नहीं चाहिए मेरे को, Oh, राइट बैक in ही center खिलाना. back, he sounds cool. I think he gets outclassed in the right back position, but the center back might be very, very usable. चुप बेटा, सेंटर बैक Got a यूजफुल, combo of pace. तगड़ा फोड़ेगा तेरा में. Yeah, that's the thing. कुंडे को सेंटर बैक It's just gonna खिलाएगा. be the height, but there are other similarly Yeah. बेटा की बृहस्पतिवार आज यस sized center टुमारो backs that do pretty well. कल ही है ना, ये गलत बोल रहा हूँ मैं. High though. नहीं परसों आएगा, परसों. They got Van Dyke here at 117. वैन डाइक डिफेंडिंग 150. नाइस. Yeah, it goes without saying his top class. वी नजीमुद्दीन भाई, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम. मैं सही हूँ, बताओ आप कैसे हो? Oh yeah, this is gonna be a tough defender to get past. इसका भी 130 एक्रोबैटिक pace. क्लियरेंस दिया है भाई, सही है. And then Saliba here 129. सलीबा उतना अच्छा नहीं, इस बार अच्छा है, अच्छा दिया है भाई, अच्छा दिया है भाई. ट्रेस भी अच्छे खासे दिए इस बार. 46 defending here. 140 लास्ट बार तो physical. भूल गया था भाई. टीम प्लेयर ट्रेड है भाई. टीम से मतलब ये डिफेंडिंग मतलब Comparing nominees, इनकी एलवी Saudi players, look out for भाई वो तो नहीं देंगे. traits. नूनो मेंडेस, Nuno Mendes. Talented, you know, most meta traits. नूनो मेंडेस, Most of the cases there. So it might be like the difference. नूनो between मेंडेस आ गया है. dives into tackles or speed dribbler in for an example. Yeah, that's a good shout actually about the speed dribbler one. I saw a few people mentioning. I think Rafinha had it on him. भाई अटैकिंग हाई, डिफेंस भी हाई. जो Small खिलाएगा little लेफ्ट बैक, adjustments ये like लेफ्ट that विंग can चला make a जाएगा. difference. राफिनिया दिखा भाई, डोनारुमा अच्छा. And Ooh. then Gianluigi Donnarumma. डोनारुमा इसको कुछ नया ट्रेड दिया है भाई, कुछ नया ट्रेड दिया है इसमें. लॉन्ग थ्रो दिया है भाई, Ones. 1-on-1 गोलकीपर दे दिया भाई. अरे भाई So साहब, out of the Utati that we've looked at, who for What you on earth chat is it? stands out? Who are you looking at and going, yes, that's I'm an भाई upgrade. साहब 20 कार्ड Right बना off the दिया bat, भाई. I'm seeing a lot of people be excited for Rafinha, and I saw a few for Vitinha as well. That's kind of the two ones that stuck out. But then again, like looking at the 117s like Mbappe, Van Dijk, I mean, those guys are obviously going to be the best. Yeah, bias aside, I think that Dembele is looking amazing. Specifically in the striker position, I think. ये because पीटर चेक से weak अच्छा foot, होगा. हाँ लग तो रहा है भाई. pace, he has, decent height. I start बताओ जिन्होंने पैसा खर्चा करके VDS को उठाया होगा उनका क्या होगा. Flexible too to future-proof your team a little bit. It's really cool because then you can shift it to the right wing position if you find a better striker. डेम्बेले इज ऑन टॉप भाई, डेम्बेले का एकदम भगवान बना दिया गेम में. That's actually a good point where you look at like solidifying your striker first. Say you're going to use him there, डेम्बेले को भगवान बना and दिया then भाई. maybe over the months you find a striker you prefer up front, and then you go, all right, I still need Dembele in my team. Let's shift him out to right wing. हाँ VDS गोटी रहेगा भाई, तो सही I है. mean, the same could be said for Mbappe with left wing. इसका स्टैमिना और स्किल मूव Sure. एकदम 5-5 दिया Very भाई. good. I just think that Dembele has the edge just because of the weak foot at the striker position. डेम्बेले के पास वीक फुट If you're अच्छा using है, like a central striker. इसका वीक फुट अच्छा नहीं है, लेकिन इनको स्टैट्स बढ़िया दिया है भाई Because you can एम्बापे का. have one instead of pair of strikers and you wanna early in the finesse shots, find that angle. हाई लो दिया है, चलो सही है. That's क्या good दिया है, points. ट्राइज टू बीट ऑफसाइड ट्रैप. ओके, In margins. ये ट्रेड पहले भी था In इसका. margins. Very much so.
So I just want to come back here to the Utah draft and just wanted to go through just showing how it works again. So we got the Utah draft vouchers that we get from the store, and I'm just going to jump right into it. I'm going to go for Utah 2, and then we're just going to use the 10 drafts here. 10 खोल दिया भाई एक बार में. And let's see who comes up. Oh, right back, Kunde. Denzel Dumfries. Oh, भाई एल लग गया इनका. One In of Utah us, draft. Antoine. One of us. You can also get regular भाई कुछ नहीं team मिला. of the year players. कुछ नहीं मिला, इनको भी कुछ नहीं मिला. Yeah, this is pool भाई मैं A. तो नहीं खोलूंगा भाई. Then pool B is going to be the 115s, and then pool C is going to be भाई साहब इनका ही गू लग गया. 113 to 115. And then same thing with this Utah draft. It's just splitting up the pool A essentially. नहीं मिलने वाला भाई पूल And से. then with Icon though, I can use the draft vouchers that we've been accumulating the whole time. So let's give this one a shot, see what comes up. इसमें भी गू ना लग जाए भाई. स्कॉटलैंड One of सीएम us. McTominay. One of मैक्सिमम मिल गया. 30 115 Let's here. go. भाई स्ट्रीम पे 30 हो रहा है इनका. And yeah, so. And then Just the a welcome note one here. कुछ बोलना ही नहीं है Team भाई. of the Year icon draft follows the same progress as of the drafts that we currently have in game. The Utah draft will follow different progress, but I think I noticed they have shared progress in terms of when you get guaranteed pool A. लग गए लग गए लग गए. And the progress from the Live Team of the इनके Year लग icon गए. draft will carry over for next week because audio continues and we still have honorable mentions too. So it will carry over for next week's, the other weeks, sorry, draft progress too. अभी So झिंगा just नहीं to दिखाएंगे clarify, लग रहा that's है. where we're seeing pool B and pool A. Yeah. भाई These डीलक्स will मतलब carry जिन्होंने over जेम्स to खर्चा कर दिया जैसे कि honorable मैं लग गया तो उनका मैंने 30,000 जेम्स उड़ाया है भाई लास्ट दिन. Exactly. Okay, 30,000 nice, nice. रख देता तो काम आता भाई. थोड़ी पता था ये So लोग the इसको next नहीं thing, कर देंगे. just to show here, is going to be the Star Pass. So it's a new Ultimate Team of the Year Star Pass, and we चार have पास Beckenbauer as the star of बकना it. बुरा And we'll बकना बुरा आएगा take a बकना look at बुरा. the rewards here. Nothing too crazy, but we'll check out this Beckenbauer at gold rank already. So बकना 115 बुरा बकना base, बुरा बकना बुरा. can play CDM as well. 141 defending. अच्छा इसको सीडीएम खिलाने के लिए बेस्ट है. सीएम नहीं मतलब सीबी नहीं चलेगा इसका. Physicality and pace. सीडीएम खिलाओ. Decent. Obviously, the defending sticks out, and I think just the all-around passing ability too. Medium high. प्ले में करे लॉन्ग शॉट टेक करे तो इसको सीडीएम ही खिलाओ भाई. इसको So सेंटर we में are going for the CDM. Star Pass in the premium route सीडीएम खिलाना बेस्ट है भाई. there, and then the regular route here will have vouchers and our regular slate of resources. But hey, there's actually a Toddy 26 ball in there. 26 ball. I don't know if I'd actually use this one. This one might be just for like PvE matches. If I'm playing PvP, I Yeah. tend to use the setting where I turn it really bright. If you're playing head to head, you can go do that. आई But cool ball nonetheless. कुछ और दिखाओ. ड्राउजी खत्म. Both eyes would be able to, find the ball as easily. But it's अरे pretty चैट्स इतने लेट क्यों लोड हुए मेरे. novelty of it. আমি কি চাইলে রাফিনা এক্সচেঞ্জ করে 112 রাফিনা নিতে পারবো? Yeah, looks very nice. পারলে সব পারবে. I guess just again Swap to go করতে through পারবে, these swap. are Utah exchanges. They all live here. एक्सचेंज में घुसो. And then the team of the year exchanges. एक्सचेंज में घुस जा भाई, मुझे देखने दे यार. And then क्या चाहिए पता चल जाएगा एक्सचेंज में. different भाई ones एक्सचेंज here. And then खोलते ही flashback, गाली if you मिलेगा haven't इनको, already इसलिए नहीं खोल seen, रहे. It's another way to use your draft vouchers. एक्सचेंज दिखाते ही गाली खाएंगे. The Musiala exchange. So I guess one thing to shout out here is Utah vouchers. Not in exchanges. भाई तू दिखा अल्टीमेट टीम ऑफ द ईयर में क्या है. गाली खाएगा सबसे. And then quests here, these are all the same stuff. नहीं दिखा रहा है यार.
भाई ये लोग गाली खाएंगे, माँ कसम दिखा दिए तो। And then looking just at badges. अरे ये सब नहीं दिखना, एक्सचेंजेस दिखा। Players here. अबे यार एक्सचेंजेस दिखा Yeah, भाई। see the think tack comments for too. I'm seeing the the comments exchanges? of everybody asking to show the exchange requirements. Obviously उसी के लिए तो we आए don't हैं need to do घंटी। that, guys. It will definitely cause implications in the market. Nobody wants Yeah. to Implications in the trust market? काई का implication भाई? Exactly. क्या We'll leave बकचोद it to you guys to बकचोद see आए it when the देखने? event goes live on Thursday. But rest assured, इनको some of the स्ट्रीम पे players गाली here, नहीं the खाना, exchanges, यही बात है। इनको स्ट्रीम पे should गाली be नहीं all right. खाना, यही बात है और Not कुछ saying नहीं, all of them. ये नहीं दिखा I'm रहे। just saying some of them. Yes, exactly. Yeah. अभी So दिखाइए, I saw someone गाली in chat भर देंगे asking भाई about स्ट्रीम पे, Jenga. कोई नहीं देगा, And I सब चले feel that's जाएंगे। a perfect segue for the next part of the show. So we don't actually have Jenga in the build, so we're not going to walk through the event. However, we will be able to show the players in a player banner up on screen as your kind of first look at the event. And obviously, as TAC has a connection, I guess, to Jenga, it'd be great to get kind of, we can walk through like a small little walkthrough of the event so you know what to expect when this goes live at the same time as you, Toddy. Absolutely, I would love to. तू तो गाली खाएगा बेटा, एक्सचेंज एक बार पता चल जाए। ए, रुक क्यों गया भाई? Why don't we pull the player banner to contextualize this? Brazilian, you understand, but ये क्या है? we in the team, we opted to. क्वालिटी कम क्यों हो रहा है भाई? मोबाइल डेटा पे देखता हूँ, रुको। It's hard to translate, but it's that Brazilian flair can be used in both football and then. अबे क्या हो रहा है यार? सबका हो रहा है कि मेरा ही हो रहा है? And this is an event that celebrates Carnaval, Rivaldo, Brazil, Neymar. Latin America, and Rivaldo. as you can see, it's reflected here in this player. नेमार का है भाई? We have Capita with a signed version. Really cool to see. Rivaldo, Aymar, Roberto Neymar Silva, का है भाई? Barbu, and more. Out of these players here, I'm really curious to see the Carlos Alberto Capita. नेमार किधर है? He might be a good one because he also plays right back. I haven't checked if he plays right back in this version yet. Usually does so. एक्सचेंज That वाला means देखाते he ना has, अनिवान। higher base. And to one, what are the highlights for you while I prepare myself to kind of like tease the community a little bit about what Jenga is नहीं about यार, and what they नहीं can दिखा रहा है भाई। expect. अरे चैट बहुत लेट Yeah, I think right भाई। away. I Yaar, think बहुत right away late आ रहा है, seeing इसलिए मुझे दिख Carlos नहीं रहा है। Alberto at center back as मुझे kind मन of में a वेट कर signature लो। item. That'll be interesting. एक्सचेंज I इन्होंने guess दिखाया what नहीं we है, can expect दिखाएंगे to भी see नहीं। in this event is एक्सचेंज नहीं दिखाएंगे, a बोल chapter. लीजिए। You'll be able to play through some matches, earn some players here, and then there's also going to be What's- the draft system. So a little bit of what we've seen with Team of the Year, but slightly in a smaller scale. Yeah, this will be a secondary event. Anna! As, it will be released this Thursday. Ulan ka dibe na? So Ranga normal putta be, waiting. pagla nagi. Carnival is almost here in real life. Everybody's preparing in Brazil. Ranga putta Already. chalo be. Everybody gets the excitement up. So Kam dekhe check bata. let me teams. See, are people gonna be there? Kunde? I would say in most cases, I thought it was Ah, acceptable, Max देंगे, but Max I'll देंगे, let Max the देंगे। community. Max देंगे, Max देंगे, Max देंगे। You got it. Max देंगे, I'm sorry, It's really Max देंगे। exciting because it's something that Max specifically देंगे, also Max the देंगे, Max Brazilian देंगे, my community fault. have Max been देंगे। requesting a lot over the past few months. So Max, Max. glad to bring this as a community request. It's great to see feedback being reflected. उसको एक्सचेंज Game. करने में फट से क्या हो Unfortunately, जाएगा? we don't have the actual event to show, but this comes out this Thursday UTC along with Ultimate Team of the Year. ऊपर क्या And बोल the रहा है Jenga भाई? will last for 2 weeks, Well, देखाती right, ना। starting this Thursday UTC. I'm really excited to see the comments, reviews, opinions of the event. And as Antoine said too, there's more to Jenga.
there's a mini star pass. There are drafts, and we might have even more to show on Thursday. So I hope you guys are excited as I Thursday को am. stream होगा The player banner, although it's great, doesn't make justice to Jinga. और खतर बाहर है अभी Well said. And I guess if we didn't already point it out, भाई नीचे वाले का there's a नाम new टाक है ना hero in the जितना event मुझे that we पता है haven't seen ऊपर वाले का नाम in एंटोन है and that's Pablo Aymar. He's not Brazilian, but he does bring that South American flair as a hero in the Jinga event. But I'm भाई excited for the जिंगा different इवेंट players that में are coming in. both ब्राजील in होना France चाहिए and अर्जेंटीना क्या कर रहा है Spain. We'll also have मार्टिनेज some क्या करेगा वहां पे on some of the top Brazilian players coming in. मार्टिनेज क्या करेगा मार्टिनेज Should be एमार exciting. इबार्गो Argentina, क्यों भाई hermanos. I'm also noticing जिंगा तो our names ब्राजील are में इवेंट swapped होता है on our Oh. banners here. Huh. It seems like Tak has just walked into becoming Antoine here. I was shocked for a second. we'll fix that real Antoine. quick, but I was like, hold up a second. I'm not Antoine talking Tak about है Jinga here. दोनों मिक्सअप हो गए But with that said, we're gonna show off. Speaking, I guess, of faces and getting those accurately portrayed, we have some new face scans coming into FC Mobile. Some of them have already launched about a week ago. Some are coming in pretty soon, but we just wanted to showcase a few of them there. And there we go. Accurate face scans, accurate Antoine, accurate TAC. But we'll just show a few of them here, some of the Premier League players. Honestly, I was excited. I was like, am I going to start speaking Portuguese right now? Like, is... But no. Where's my cap? Where's my cap? Oh, that would ये be लोग funny. आर यू एक्साइटेड बोल रहे हैं मैं बहुत But in any एक्साइटेड case, we हूं do have a few of the सामने ला दे screenshots here. We wanted to just show you guys so एक्साइटमेंट के that साथ if पेला you जाएगा have any of these players, you'll notice that their face scans have been updated. So some of the Premier League, like Nuri here. If we go to the next couple ones, we can scroll through. क्या किया इन्होंने See Jared Bowen there. उतना को चेंज किया है It's a little tough to tell zoomed out, but if you have them in your team, Tanaka from Leeds, and then our last one here with Granit Xhaka on Sunderland. So there's going to be a bunch of these added in. I think one that we थोड़ा don't have a थोड़ा screenshot change here, कर but we रहा है actually saw in build. गेम का कुछ Didn't तब point it out करेगा थोड़ा earlier. चेंज हो Was रहा है Rafinha is getting like a new face scan. Last I saw. So I think it's more accurate to his hairstyle. And as he's Utati 12th man, like that's perfect timing. भाई ये क्या था ये क्या स्कीम था So, भाई just to look वो at this. देखने लोग आए थे एक्सचेंज ही नहीं And, दिखाया make sure that you guys check your teams if there's any players that अरे क्या have their चेक face करूं scans एक्सचेंज updated. तो A bunch of दिखा them get done every so often. So if you are noticing any players एक्सचेंज देखने आए थे that कि you एक्सचेंज notice, क्या hey, करेंगे this guy's face scan or his नहीं hairstyle दिखाएंगे is a हमारा little bit मजा है not exactly what it is in the real world, always send us a message on Discord, on Reddit, wherever. तेरे घर पे मैसेज भेजता हूं मैं रुक Just a quick little shout out there, but yeah, I think we're back to being ourselves now. I feel Antoine. I think you feel very tack at the moment. Yeah, we had to get the ये face भाई scans क्या बनाया है भाई updated इसको भाई there. क्या बनाया है भाई Nice transition into that topic of the face skins. It was all planned. It was not It was all improvised planned. at all. हाँ प्लान हो गई तेरे And I घर guess as we wrap up our खाने show, का भी प्लान बना रहा हूं मैं we do want to share the redemption code up on screen, up on the top. It's going to be Utati Trade-In. So you'll be able to get it's a voucher we have alongside some rank up tokens. It's a voucher and a 100 rank up. So 100 रैंक अप टू के a little निकलवा bit दे दिया the rank points भाई because मैं I तो am in बड़ा आदमी बन गया go through a major 100 रैंक अप team टोकन renewal there. 100 भाई We're going to sell a few players. We're going to bring in some reinforcements. And we'll have to, review 100 रैंक अप dynamics of टोकन दे दिया भाई this. उफ You know what happens when you bring Crazy. a power into a single line. So, man, भाई बड़ा आदमी बन गया मैं no, really सीधा मैच हो on जाएगा top of मेरा this कार्ड game to control the dynamics there in the dressing room. सीधा ही आएगा भाई It's gonna be a lot of thinking there. But yeah, make sure you guys use the redeem code here. ये भाई तू लोग Make sure भाई you grab your खत्म कर दिया भाई tokens, खत्म your खत्म voucher. कर दिया भाई गेम को I'm एकदम also noticing that I'm fading into this background right now. कुछ नहीं बचा भाई But it's been a show, guys. It's been a show. We went through
You Toddy, if you didn't see earlier, coming a little bit जो late, देखने go आए check थे back the recording. You'll be बीसी able to वाला see वो how तो U दिखाई Toddy नहीं। works, the U 25,000 Toddy लोग draft में 5,000 tokens, लोग देख U रहे Toddy हैं, सबको chapter. एक्सचेंज ही Get देखना yourself the था। choice between हम a एक्सचेंज 115 नहीं Kunde or a दिखाएंगे, 115 हम Holland, नहीं and then the दिखाएंगे, exchanges where you हमारा put in a red मर्जी rank है। Toddy nominee, you get back a gold rank U Toddy player alongside some other options. So all in all, I think TAC, a lot to think on. A lot. बाल का सब बाल, पूरा इवेंट ही बाल। It's in the game. क्या भूलूं भाई, मैं कुछ भूलने का मन ही नहीं कर रहा है भाई। खत्म है भाई, खत्म है, एंड। चलो भाई, आप लोग भी जाओ, जो भी देख रहे थे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय ऑल।